আঁচনিৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে আনিছে কোটিপতি বাইদেউ আঁচনি। ৰাহুল গান্ধীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে 5 জুনত কংগ্ৰেছে প্ৰতিগৰাকী দৰিদ্ৰ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত 1 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে। আৰু লগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ দৰমহা ডাবল কৰাৰো ঘোষণা কৰিছে 5 জুন তাৰিখে। আমি লৈ আহিছো সবিশেষ খবৰ। এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ কোটিপতি বাইদেউ আঁচনি সকলোকে আচৰিত কৰি ৰাহুল গান্ধীৰ বৃহৎ ঘোষণা। আৰু মোদী চৰকাৰে নকৰা কাম কৰাৰ কথা মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। 5 জুনত প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ একাউণ্টত সোমাব 1 লাখ টকা। 5 জুনত পোনপটীয়াকৈ কংগ্ৰেছে দিব এই ধন। প্ৰতিগৰাকী দৰিদ্ৰ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত 1 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰিব 5 জুনত। আৰু এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ। আৰু 5 জুন তাৰিখে প্ৰথম অৱস্থাত 8,500 টকা প্ৰদান কৰিব কংগ্ৰেছে। প্ৰতি মাহে 8,500 টকাকৈ কংগ্ৰেছে প্ৰদান কৰি যাব বুলি ঘোষণা কৰিছে। প্ৰতি মাহৰ 4 তাৰিখে 8,500 টকাকৈ লাভ কৰিব দৰিদ্ৰ মহিলাই। আৰু মোদী চৰকাৰৰ আঁচনিক চেলেঞ্জ দিছে এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত বছৰি 1 লাখৰ বিপৰীতে 2 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে। বিজেপিৰ লাখপতি বাইদেউৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ কোটিপতি বাইদেউ আঁচনি। আৰু কংগ্ৰেছে এবাৰ কোটিপতি বাইদেউ আঁচনি হাতত লৈছে। 4 জুনত অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ দৰমহা দুগুণ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। কংগ্ৰেছে কেইবাটাও বৃহৎ কাম কৰি দেখুৱাব। মোদী চৰকাৰে নকৰা প্ৰতিটো কাম কৰি দেখুৱাব কংগ্ৰেছে। আমেথিৰ জনসভাত ৰাহুল গান্ধীৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা। দেশৰ প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক 1 লাখ টকা দিয়া হ'ব বুলি জনাইছে। বছৰি 1 লাখ টকা আৰু প্ৰতি মাহে 8,500 টকাকৈ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ লাভ কৰিব। প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব কংগ্ৰেছে। পৰৱৰ্তী সময়ত সেই তালিকাৰ পৰা প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়াল এগৰাকীকৈ মহিলা বাছনি কৰা হ'ব আৰু বেংক একাউণ্টৰ নম্বৰ লোৱা হ'ব। বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ প্ৰতি মাহৰ 4 তাৰিখে 8,500 টকাকৈ লাভ কৰিব বুলি জনাইছে। আৰু মোদী চৰকাৰ লাখপতি বাইদেউৰ বিপৰীতে ৰাহুলে আনিলে কোটিপতি বাইদেউ আঁচনি। 5 জুনত দেশত নতুন আইন আনি মহিলাৰ একাউণ্টে বছৰি 1 লাখ টকা সোমাই দিয়াৰ ঘোষণা ৰাহুল গান্ধীৰ। দৰিদ্ৰ মহিলাই প্ৰতি মাহে লাভ কৰিব 8,500 টকা আৰু প্ৰতি মাহৰ 4 তাৰিখে 8,500 টকা বেংক একাউণ্টত সোমাব মহিলাৰ। আৰু আমেথিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ৰাহুল গান্ধীৰ এই নতুন গেৰাণ্টি। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে মোদী চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱাম বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু এইবাৰ মহিলাক 10,000 নহয় 20,000ও নহয় 1 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু বিজেপিয়ে নকৰা কাম কৰি দেখুৱাব কংগ্ৰেছে। 5 জুনত প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ একাউণ্টত 1 লাখ টকাকৈ সোমাব বুলি বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু 5 জুনত পোনপটীয়াকৈ কংগ্ৰেছে এই ধন প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ তালিকা কংগ্ৰেছে প্ৰস্তুত কৰিব আৰু সেই তালিকা অনুসৰি মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত 1 লাখ টকা প্ৰদান কৰিব। প্ৰতি মাহৰ 4 তাৰিখে 8,500 টকাকৈ লাভ কৰিব দেশৰ দৰিদ্ৰ মহিলাই। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য শুনক। सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन क्या करेगी। मैं आपको आज अमेठी की जनता को, माताओं बहनों को यह बताने आया हूं, भाइयों और बहनों, अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम लोग खारगे जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं। अमेठी के गरीब लोगों से कह रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। 4 जून अमेठी के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी 4 जून। अभी ताली मत बजाओ, अभी मैंने बात बोली नहीं। 4 जून लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से, अमेठी के हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। एक महिला का नाम अमेठी के हर गरीब परिवार में से चुनी जाएगी। वैसे ही जैसे अमेठी में होगा वैसे पूरे हिंदुस्तान में होगा। और फिर 5 जून को हम कानून बना देंगे। भाइयों और बहनों, अमेठी के हर गरीब परिवार में एक महिला चुनी जाएगी।
उसके बैंक अकाउंट में साल का 10,000 नए, 50 नए, 70,000 नए, 80 नए, 90 नहीं, साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। चार जुलाई 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। 4 अगस्त 8,500 रुपए। हर महीने पहली तारीख खटाखट 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 अंदर। मीडिया वाले जो बोलना चाहते हो बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बता रहा हूं, ज्यादा बोला तो 1 लाख नहीं 2 लाख कर देंगे। मैं तंग आ गया हूं। 24 घंटा मीडिया वाले अमीरों की बात करते हैं, अंबानी की शादी दिखाते हैं, 8 करोड़ की घड़ी दिखाते हैं और गरीबों की बात कभी नहीं करते। इसीलिए 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में, साल का 8,500 रुपए खटाखट 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 महीने का अंदर। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। अमेठी के सारे गरीब किसानों का कर्जा माफ हम करके दिखाएंगे। अमेठी में, उत्तर प्रदेश में आपको सही दाम नहीं मिलता। किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, गन्ने के लिए सही दाम नहीं मिलता। मार्केट में जाओ, कुछ भी खरीदो, उसका सही दाम मिलता है। चिप्स का पैकेट खरीदो, उस पे प्राइस लिखी होती है। मगर जब किसान अपनी मेहनत का अनाज, शुगर केन बेचना चाहता है तो उसे कहा जाता है भैया तुम्हें सही पैसे नहीं मिलेंगे, सही दाम नहीं मिलेगा। इसीलिए अमेठी के सारे किसानों अच्छी तरह सुनो, 4 जून के बाद कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगी। आपके मेहनत का सही पैसा आपको हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया की सरकार देगी। यहां पे बंद कर रखा है, कम से कम लोगों को देते हैं। हम फिर से मनरेगा अच्छी तरह चालू करेंगे और 250 रुपए नहीं, 400 रुपए मनरेगा के लिए आपको मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं जो अमेठी में अलग अलग काम करती हैं, मैं जानता हूं, आपने मुझे बताया था कि आपको सही दाम नहीं मिलता, आपको सही पैसा नहीं मिलता है। 4 जून आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। और आपलोকে রাহুল গান্ধীর মন্তব্য শুনিলে। নির্বাচনী প্রচার সভাত রাহুল গান্ধীৰ এই ঘোষণা 5 জুনত প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মহিলাই বেংক একাউণ্টত 1 লাখ টকা লাভ কৰিব। আৰু মোদী চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰা কাম এবাৰ কংগ্ৰেছে কৰিব বুলি গ্যাৰান্টি দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। 5 জুনত 8,500 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু প্ৰতি মাহৰ 4 তাৰিখে 8,500 টকাকৈ বেংক একাউণ্টত দেশৰ দৰিদ্ৰ মহিলাই লাভ কৰিব বুলি জনাইছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 1 লাখ টকাৰ বিপৰীতে 2 লাখ টকালৈকে এই পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব বুলি ঘোষণা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। বিজেপি লাখপতি বাইদেউ আঁচনি, ইতিমধ্যে বিজেপি লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হৈছে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মহিলাসকল। আৰু বিজেপি লাখপতি বাইদেউৰ বিপৰীতে এইবাৰ কংগ্ৰেছে কোটিপতি বাইদেউ আঁচনি হাতত লৈছে। 4 জুনত অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ দৰমহা দুগুণ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। মোদী চৰকাৰে নকৰা প্ৰতিটো কাম এইবাৰ কংগ্ৰেছে কৰি দেখুৱাব বুলি মন্তব্য কৰিছে। আমেঠিৰ জনসভাত দেশৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে, দৰিদ্ৰ মহিলাৰ বাবে এই ঘোষণা ৰাহুল গান্ধীৰ। 5 জুনত প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বেংক একাউণ্টত 1 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ কথা ৰাহুল গান্ধীয়ে ঘোষণা কৰিছে। প্ৰতি মাহে 8,500 টকাকৈ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব দেশৰ মহিলাই। আৰু এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে সকলোকে আচৰিত কৰি এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ৰাহুল গান্ধীয়ে 1 লাখ টকাকৈ প্ৰথম অৱস্থাত দিয়া হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 2 লাখ টকালৈকেও বৃদ্ধি পাব পাৰে এই পৰিমাণ। আৰু দেশৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ একাউণ্টত 1 লাখ টকা প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আমেঠিৰ জনসভাত ৰাহুল গান্ধীৰ এই বৃহৎ মন্তব্য। আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়তে ৰাহুল গান্ধীয়ে এই গ্যাৰান্টি দিছে দেশৰ দৰিদ্ৰ মহিলাৰ, দেশৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে এই বৃহৎ গ্যাৰান্টি এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ। মোদী চৰকাৰৰ গ্যাৰান্টিক এইবাৰ চেলেঞ্জ দিছে কংগ্ৰেছে। আৰু মোদী চৰকাৰৰ লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ বিপৰীতে এইবাৰ কংগ্ৰেছে হাতত লৈছে কোটিপতি বাইদেউ আঁচনি। কোটিপতি বাইদেউ আঁচনিৰ জৰিয়তে
কোটি কোটি দৰিদ্ৰ লোক কোটি কোটি মহিলা লাভান্বিত হ'ব বুলি বিশ্বাস কৰিছে কংগ্ৰেছে আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে দৰিদ্ৰ লোকৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বুলি জনাইছে ৰাহুল গান্ধীয়ে সেই তালিকা অনুসৰি বেংক একাউণ্টত 1 লাখ টকাকৈ দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনৰবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছিল শুনক नहीं अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन क्या करेगी। मैं आपको आज अमेठी की जनता को माताओं बहनों को यह बताने आया हूं भाइयों और बहनों अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम लोग खारगे जी राहुल गांधी अखिलेश यादव हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं। अमेठी के गरीब लोगों से कह रहा हूं अच्छी तरह सुनिए 4 जून अमेठी के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी हर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी 4 जून। अभी ताली मत बजाओ अभी मैंने बात बोली नहीं 4 जून लिस्ट बनेगी हर गरीब परिवार में से अमेठी के हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा एक महिला का नाम अमेठी के हर गरीब परिवार में से चुनी जाएगी वैसे ही जैसे अमेठी में होगा वैसे पूरे हिंदुस्तान में होगा और फिर 5 जून को हम कानून बना देंगे भाइयों और बहनों अमेठी के हर गरीब परिवार में एक महिला चुनी जाएगी उसके बैंक अकाउंट में साल का 10,000 नए 50 नए 70,000 नहीं 80 नहीं 90 नहीं साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर 4 जुलाई 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर 4 अगस्त 8,500 रुपए हर महीने पहली तारीख खटाखट अंदर। मीडिया वाले जो बोलना चाहते हो बोलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं बता रहा हूं ज्यादा बोला तो 1 लाख नहीं 2 लाख कर देंगे। मैं तंग आ गया हूं 24 घंटा मीडिया वाले अमीरों की बात करते हैं अंबानी की शादी दिखाते हैं 8 करोड़ की घड़ी दिखाते हैं और गरीबों की बात कभी नहीं करते। इसीलिए 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में साल का 8,500 रुपए खटाखट महीने का अंदर। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया अमेठी के सारे गरीब किसानों का कर्जा माफ हम करके दिखाएंगे। अमेठी में उत्तर प्रदेश में आपको सही दाम नहीं मिलता किसानों को अनाज के लिए शुगर केन के लिए आलू के लिए गन्ने के लिए सही दाम नहीं मिलता। मार्केट में जाओ कुछ भी खरीदो उसका सही दाम मिलता है चिप्स का पैकेट खरीदो उस पे प्राइस लिखी होती है मगर जब किसान अपनी मेहनत का अनाज शुगर केन बेचना चाहता है तो उसे कहा जाता है भैया तुम्हें सही पैसे नहीं मिलेंगे सही दाम नहीं मिलेगा। इसीलिए अमेठी के सारे किसानों अच्छी तरह सुनो 4 जून के बाद कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगी आपके मेहनत का सही पैसा आपको हिंदुस्तान की सरकार इंडिया की सरकार देगी। यहां पे बंद कर रखा है कम से कम लोगों को देते हैं हम फिर से मनरेगा अच्छी तरह चालू करेंगे और 250 रुपए नहीं 400 रुपए मनरेगा के लिए आपको मिलेगा।
आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं जो अमेठी में अलग अलग काम करती हैं, मैं जानता हूं, आपने मुझे बताया था कि आपको सही दाम नहीं मिलता, आपको सही पैसा नहीं मिलता है। 4 जून आप